मैं इस एक ज़माने में इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ कुछ अटेंड भी कर चुका हूँ साहित्य अकादमी में। ये बहस पहले भी हुई है और मैं भी उसमें शामिल था। ख़ासतौर पर इतने सारे नाम लेके राव साहब जब डरा रहे थे तो उसमें विजय जी मुझे याद है, विजय तेंदुलकर, when he was presiding once and with that cinema माशुता देवी जी was there और उनका एक नॉवेल था लैली आसमाने रायडा जिस पर संघर्ष नाम से एक फिल्म बनी थी और दिलीप साहब उसके बड़े उसके हीरो थे, उसके खास एक्टर थे। तो इस तरह के एतराज़ की बात आई थी कि ये लिटरेचर, ये जिस तरह से आपने नॉवेल लिखा है, क्या आपको लगता है फिल्मों पर वैसे ही आया है? आप उस फिल्म से सेटिस्फाइड हैं? तो विजय जी ने बहुत सारे सवाल किए थे जिसमें कुछ गवाही के लिए बुला लिया था मुझे भी, क्योंकि मैंने उसमें फिल्म में कुछ तरमीम की थी, डायलॉग भी लिखे थे। और तो माशुता देवी जी ने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही थी, मुझे याद है कि देखिए 2 वजह थी मेरी ये नॉवेल देने की। एक तो ये कि मैं दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ और दिलीप कुमार मेरी कहानी में काम करे, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। रेस्ट आई डिडंट इंक्वायर के क्या करूँगा। और बात बड़ी ईमानदारी की थी। और दूसरी बात ये थी कि वो ट्राइबल एरियाज में काम किया करती थी, आप सब जानते हैं जो यूज्ड टू वर्क इन दोज एरियाज। तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से दूसरी बात भी कही थी कि इतने पैसे मुझे कभी जिंदगी भर में मैं नहीं जोड़ सकती थी जो मुझे एक ही बार में मिल गए थे, एंड आई कुड यूज इट फॉर दोज ट्राइब्स। तो सिनेमा हैज डन इट्स सर्विस इन इट्स ओन वे। वो कहीं ना कहीं बहक भी जाए तो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी की मदद भी करता रहता है और सेवा भी करता रहता है। उसका अपना एक ढंग है और उसमें अच्छा बुरा भी है, सब कुछ है। तो ये सब मिला के जब जहन में आती है ये बात कि मेरा रिश्ता, मैंने फिल्में भी बनाई हैं, तो सिनेमा के साथ क्या ये जो रिलेशनशिप है लिटरेचर के साथ, मुझे लिटरेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी पहली खेती जो मैं हल चलाना शुरू किया था तो वो लिटरेचर ही की ज़मीन पे कुछ बोने की कोशिश की थी, कुछ उगाने की कोशिश की थी। और उसमें ये मैं दोनों में कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर हूँ किसी हद तक। तो मुझे थोड़ी सी, मेरे साथ अगर आप चलें तो थोड़े से मैं आई हैव अ थॉट विच आई वांट टू प्लांट, मतलब कोई एक ख्याल है जिसकी वजह से दोबारा यही सब्जेक्ट लेकर बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी अगर हिस्ट्री या इसकी जर्नी या इसका सफ़र बताऊँगा तो कहीं छपना था इसलिए अंग्रेज़ी में, वरना मैं इसी तरह हिंदुस्तानी में बोलता और लिखता। तो कहीं कुछ लोगों से मैंने अंग्रेज़ी अपनी दुरुस्त भी कराई है, जिसमें शांतनु रॉय यहाँ पे हैं मूवी, तो उनसे भी मैंने कुछ, और कुछ खालिद साहब से। तो मैंने कहा भाई इसको मैं कहना यूँ चाहता हूँ, ये ज़रा सा देखो मेरी अंग्रेज़ी देख लो, मेरी मिडिल स्कूल की अंग्रेज़ी है, लेकिन लेट मी है तो बर्दाश्त कीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में पढ़ता भी जाऊँ। मैं आपकी इजाज़त से ये कहना चाहता हूँ और आपके साथ ये बात बांटना चाहता हूँ कि ever since cinema was invented way back in 1895 by Lumiere brothers, if you remember, in France, the audience goes to see a film for a living experience that is happening there, and they know it is not living.
That's the interesting part of it. They want to see, go and see it. And then they identify themselves very well with the story and characters of a film. जब कहानी या सिनेमा चल रहा होता तो मतलब मामूली सी बात है कि एक केले पर फिसल या एक कॉमेडियन हंस पड़ा, पूरा हॉल हंस पड़ता. You are identifying with that little incident. Or we cry when a child is in pain, or a mother is being tortured. That's universal. Everybody gets disturbed by it. यही नहीं, we have felt excited on chase also. Chase between the villain, उसको पकड़ो पकड़ो मारो उसको, और ये सारा हम चिल्ला भी पड़ते हैं उसको देखते देखते. And the one who dies, the tragic death, and we feel the pain, we identify with it. But on the other hand, you know that it's all make-believe, it's not true. ये जो हुआ है, when you come out, but that उस spell में जिस वक्त आप उसमें हैं, उसमें शामिल हैं, तो आपको यही लगता है. And the hero, I remember a small incident, अगर याद आ जाए बीच में मैं बता दूं कि राजेश खन्ना को आनंद में जब उनकी डेथ होती है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था. वो एक टेप चलता है, इट्स अ डायरेक्टर्स वर्क, लेकिन उनको उस डेथ की मुबारकबाद भी आती थी कि व्हाट ए डेथ सीन. तो दिस आल्सो वी आइडेंटिफाई विद दोज पीपल एंड दोज सिचुएशंस. This also keeps on happening. Cinema is partly history with us, which is available. And that can't be changed. कि ये ऐसे ही था, ऐसे ही आया था. But partly I have an opinion of my own, जो मैं बदल भी सकता हूँ. I am ready to change it if you insist. And show me another point of view. But I have a point of view which I want to relate. Arguably, then I believe the cinema was the foundation when it started. It was the beginning of a new language. और आप भी अगर बंद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. ध्यान जाता है तो डिस्टर्ब होता है. I believe the cinema was the foundation of a new language when it came out. In the beginning, D.W. Griffith, when he made a close-up with moving eyes, it was a new alphabet of another language. That's how I felt. He was known for his film, The Birth of a Nation, which he made later on. This was the beginning of that new language and a letter in alphabet, as if this close-up was one more alphabet. और इस तरह की ज़बानें हम बना भी चुके थे उससे पहले बातचीत करने, पिक्चर्स के साथ, जिसमें बहुत सैकड़ों अल्फ़ाबेट्स डाल के भी जापानीज़ एंड चाइनीज़ लैंग्वेजेस, जिसका तजुर्बा है हमें. A long shot, a panning of camera, the movement of trolley, these were the freshly laid down rules of grammar of cinema. And that is how this grammar started taking shape and increasing. Earlier, the alphabets of pictures had sound and phonetics. Just to know the sound and make a sentence or a dialogue, तो उनको जोड़ के रखते थे. तो आप एक सेंटेंस, एक लेटर लिख लेते थे, एक चिट लिख लेते थे उन पिक्चर अल्फाबेट्स के साथ. But moving images found a sequence of images and articulate a thought with no sound of speech at that time to begin with. Without that,
वो मूविंग इमेज अपने आप में कुछ कर रही है, जो बता रही है उसका एक्शन से मालूम हो जाता है. And there was no sound. From the earliest moving image of जो बनी थी, जो हिस्ट्री है, जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको भी मालूम है कि A Man Being Hanged was the first movie पूरा एक्शन के साथ जो पहली फिल्म बनी थी. And from that to the Great Robbery was a long journey covered in a very short time, but it became a story, a कहानी Great Robbery की. It took forward the craft of narrating a story through moving images, and that was the beginning of another art, another formation. Clearly, this was unique and pure indeed. How fascinating it must have been to arrange a series of interrelated images to express one's experience, an incident, or a story, or a happening, without making any sound, and it was like traveling through paintings and watching a poem or a story being told, which must have been very, very fascinating, especially when there was no sound. I think that was very fascinating. Must have been very. Consequently, cinema searched for more techniques and complex material to narrate. I'll cover it up. I won't stay here, which you all know. It was in 1931. The sound and speech were invented to make narratives easier and to grasp, and thus, you like it or not, that polluted the purity of silent cinema. वो जो हम बगैर कुछ साउंड के एक बात समझ रहे थे, अपने अंदर आ रही थी, अब वो बता देता हमें क्या कर रहे हैं, कहानी बताने लगे. लेकिन मुझे एक प्योरिटी थी उस साइलेंट सिनेमा की, जो अपना अपना ख्याल है. मैं I'll come on that later on again. It was downpour of hundreds and thousands of words, and the stories fell in the lap of cinema, becoming more and more noise. The music which was played in the auditorium spit that jumped on the screen, and the players who used to work on stage in front of you and live in front of you, they climbed the screen, and no more live experience of watching your actors. This change. इसमें एक बात ये कहते हुए अच्छा लगता, मज़ेदार लगता, बल्कि कहो अच्छा नहीं, मज़ेदार बहुत लगता है, क्योंकि हमने सुना है वो पिट में बैठे हुए लोग जो वो म्यूजिक देते थे और धड़धड़ देते थे या चीज आ जाती थी उसमें, और उसमें वो डायलॉग भी साथ साथ में बोल देते थे. तो मैं एक बड़ा मजेदार डायलॉग बताया था, एक मैं बताऊंगा, उनका जिक्र करूंगा. उन्होंने बताया था कि हम तो चिल्ला रहे थे, मार 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 साले को, तेरा कौन सा बाप लगता, मार. तो you know, those kinds of things are very interesting and told to me by a great personality called A.R. Qureshi, whom you know as Allah Rakha Khan. उन्होंने इसे, he told me कि उन्होंने बजाया है वहाँ पे एक ज़माने में, तो वो एक्सपीरियंस बता रहे थे कि क्या था साइलेंट का. लेकिन साइलेंट फिल्म में इतनी साइलेंस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसमें वो पान बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट, पान वो वाला वो लगा लो, वो पापड़ वाला भी बेच रहा हूँ, सारे के सारे बीच में घूमते रहते थे. तो शोर बहुत होता था, क्यों फिल्म तो साइलेंट है, आप देखते रहेंगे, आप हमारी सुनिए. और जब साउंड आई है तो the hall became silent and they started speaking on the screen. अब शोर ऊपर चला गया है और वो साइलेंस नीचे रह गई ऑडियंस के अंदर, और वो सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं. This I felt is a very, very interesting phase.
And when this happened, mythology and folklore were accessible in abundance, which was the earlier feed of the films. फिल्म को जिसको मोस्टली बाइस्कोप कहा करते थे उस जमाने में, कि बाइस्कोप देखने जाएंगे, बाइस्कोप में देखो। और ये फोकलोर हमारे यहाँ भरा पड़ा है, माथाली की कहानियाँ, and that way we are very very rich with that literature, and the literature starts traveling along with you with cinema. Without giving you the hard and long journey of our silent cinema, the stories of our iconic pioneer, if you remember, we must remember him, Dada Saheb Phalke, his Raja Harish Chandra was the first feature film. और जिस तरह से हमने बनाई, I don't have to go into, you all know the history, how he made that film. Raja Harish Chandra Tha, then only he made Satyavan Savitri also in Lanka Dahan wo banai, followed by Suchit Singh's Shakuntala. Again, a wonderful story from literature came into cinema and was made. कांतिभाई राठौर भक्त विधुर, उनकी एक फिल्म वो भी, और एक राम वनवास है, लेकिन एक फिल्म याद आती है भरत मिलाप, a big hit in its own times, and now the perspective started changing of literature by cinema. That little infant started finding other ways how to play, how to walk, और जो उसे सिखाया जा रहा था, जैसे मैंने कहा, कीप दैट रिलेशन, वो बच्चा है, बड़ी अभी तो 100 साल हुए, लेकिन उस वक्त तो 100 भी नहीं थे, तो दाव वो अपनी मनमानी करने लग गया, थोड़ी थोड़ी अपनी मनमानी उसकी शुरू हुई, तो वो लिटरेचर के साथ खेलना शुरू किया उसने. Dramatic changes and improvisations were made to the original texts, and this was to make them more engaging and palatable for the audience. The authenticity of the text, which we know as literature, even the holiest of scriptures ended from that juncture, and its interpretations started changing. That's the important point. Moreover, self-willed interpretations of classic texts became a rule. A bunch of songs, dances, comedy characters, such interludes, they were added. The perspective of a narrative, it changed from the original to an entertainment to engage the audience. The first film, Alamara, in 1931, in which देना है तो दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे जो हिम्मत है तो दे दे अल्लाह के नाम पे. W.M. Khan was the character which became very famous, and I'm lucky to have worked with W.M. Khan again in my times in Kabuliwala with Bimal Rice, where I was an assistant, and Khan साहब ने अपनी कहानियाँ उस वक्त के वो बताई. तो जाहिर है कि मेरे लिए वो इल्म था, लिटरेचर था, एजुकेशन थी, सारा का सारा जमा होता रहा, और बड़े खुशदिल इंसान. और काबुलीवाला का गाना बड़ा मशहूर है, प्रेम धवन का लिखा हुआ है वो, मेरे वतन, अगर याद हो आपको, लाइन याद होगी, आप याद रखती हैं, मुझे मालूम है आपको.
Now the era of sound began with that Adamara. A little over a decade after that, the Ramayana was narrated by Vijay Bhatt's film Bharat Milap, which I mentioned. And Bharat Milap में Ramayana का perspective to narrate Ramayana from Sita's point of view. And the famous line which I remember, please stop that, वो light बंद कीजिए, which started with भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, which was a very famous song. And एक नया perspective उस कहानी का, which is a great epic with us. So now this was another liberty which cinema started taking along with it. One has to see that very. The outset of the talkies, the format of the screenplay was transposed to the screen, and from here, another form in literature starts taking form, which you call a screenplay. Now, screenplay comes in a form of literature from cinema, which is again a very interesting process which happened by itself. Or the subjects were taken mostly from Nautanki, so the styles of Nautanki which was prevalent, and the Parsi theatre of that period. वहाँ से वो subjects लिए, locations, melodrama, claptrap, dialogue became common. The famous Urdu playwright, जो अगर आपको नाम याद हो, Agha Hashar Kashmiri, his works which, and they were picturized at times straight away as they were written. Actors act कर रहे हैं, the curtain goes up and you are into the play. Play khatam hua, curtain goes down. That was one another form which happened, which started very soon. It started taking कि नहीं वो curtain तो उठ गया, लेकिन वो दूसरे की एंट्री के बाद जो खाली म्यूजिक में आया करता था, वो खाली का वो हिस्सा निकाल के सीधा वहां से निकलते हुए आ गए तो कैमरा आया. तो they came. Another important element came into cinema, that was editing. Now the editing started. Now look at this relationship going on. So the editing started doing it, and that became a very, very important element in films. And it works magics, it works things which once the handy material of plays and folklore for content were exhausted, the attention turned towards the limitless material of literature, the fictions and stories which was written, and now there was no end to it. There was enough, and in every language, or har ek zaman mein, it was available. Textbooks of adventure stories were resorted to straight away. They were taken up. Take the example of the stunt-packed exploits of fearless Nadia Underwali. I'm sure many of the people remember those names, those titles also they remember. And in the Arabian fairy tale like spectaculars, and the classics of Bengali literature was, because Bengal became a very big, with Madan's talkies coming in later on, दूसरी कंपनियां जो बनी उसके बाद, हाँ, न्यू थिएटर, that's the मदान के बाद न्यू थिएटर, I was forgetting coming the name, तो नव भारत याद आ रहा था, न्यू थिएटर, and those are big. तो वहाँ पे बंगाली लिटरेचर में से बहुत कुछ मिला, वहाँ से आना शुरू हुआ. And
शेक्सपियर्स हैमलेट जो स्टेज पर भी बहुत पॉपुलर था, बिकेम अनदर पॉपुलर फिल्म ऑल्सो, खून का बदला खून. अब नाउ लुक एट द पर्सपेक्टिव of what Hamlet, how you see Shakespeare's Hamlet now, and with this title of खून का बदला खून, तो you can imagine कि ये relationship कैसे बिगड़ जाती है और कैसे बनती है. तो शेक्सपियर से रिलेशन तो बन गया, लेकिन उसके हैमलेट का रिलेशन बदल गया, वो कुछ और हो गया. उसकी कहानी का रिलेशन बदल गया. द बॉड शेक्सपियर, his plays, and he is still popular. वो आज भी शेक्सपियर उसी तरह पॉपुलर है. And we have recently celebrated 400 years of Shakespeare's plays in Bombay. And I remember I have recited a poem written on Shakespeare there. And Shantanu Ray, he translated it in English for me. And I have the versions in front of me. लिटरेचर लाइव फेस्टिवल जो होता है मुंबई में, उसमें आई हैड राइट इट. तो मैं उनकी बिगिनिंग की लाइंस थोड़ी सी बता देता हूँ, द वे ही ट्रांसलेटेड, और कहेंगे तो बाद में, जैसे वरना मैं अपनी उर्दू ज़बान में सुना दूँगा. तो उर्दू में सुनना पसंद करेंगे आप? यू लाइक टू और कंटिन्यू विद द स्टोरी? देखिए वो बाद में नहीं तो सुन लीजिएगा, ताकि लेट्स गो ऑन विद द स्टोरी विच इज गोइंग ऑन, विच विद माय स्टोरी ऑफ सिनेमा एंड लिटरेचर. लेट्स गो ऑन विद दैट. एंड फ्रॉम देयर another iconic name from literature which came to cinema was from Bengal. That was Sharat Chandra. Sharat Chandra Chatterjee and his Devdas of Sharat Chandra, a magnetic pull for cinema even today, with ceaseless adaptations in different languages, different forms. There are, अगर आप जानते हो तो कम से कम नहीं तो 150 देवदास आर अवेलेबल इन आवर इंडियन फिल्म. देवदास के वर्शंस are at a point say around late 1930s and 40s, there was an unprecedented demand for writers in films. और उस वक्त हमारी तरफ, ऐसे ही कहूँ तो ठीक है ना, कि हमारी तरफ ध्यान गया सिनेमा का, कि उसने हमें बुलाना शुरू किया, कहानी लिखो और कहानियाँ बताओ और अडेप्ट करो और उसको स्क्रीन प्ले बनाओ. और बड़ी इज्जत से हमें मुंशी कहा जाता था. वी वर कॉल्ड मुंशी जी, मुंशी भूषण, मुंशी सुदर्शन वर द फेमस, बट मुंशी प्रेमचंद डिड नॉट कम फ्रॉम देयर. दैट वाज डिफरेंट. लेकिन सिनेमा में remember a incident then again told to me by वही जैसे पिट में बजाने वाले बताए कि नहीं, अंग्रेजी फिल्मों को वहाँ पे पियानो बजा करता था, हिंदी फिल्मों में वहाँ पर पिट में एक ज़माने में हारमोनियम बजता था और तबला. तो उसमें एक चीज़ देखी गई कि जैसे रुखसती का एक गाना आया या एक होली का गाना आया, तो कहीं वो दिखाया गया, तो वो जो फोक सॉन्ग्स थे हमारे, उसके वो मुखड़े और अंतरा, मुखड़ा अंतरा गाया उन्होंने, और वो सीन भी ख़त्म हो गया, वो चले भी गए, और या उसी को 2 बार कह लिया, 3 बार. तो जो डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर वो द सेम, वो साइकिल पे जाना, डिब्बे लेकर आना, दिखाना, और फिर अगले हफ्ते जाके वो साइकिल पे वापस करना, दूसरे डिब्बे लेकर आना. तो उसमें उन्होंने कहना शुरू किया कि कहने लगे कि आप ये बंद करना है यार, फिर बार बार आप सामने आ जाते हैं.
वो लेकर आते थे, बुलाते थे, तो कहने उन्होंने कहा भाई ये गाना देखो, तुम इसको जरा सा बड़ा करो, बढ़ाओ इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सर इसका तो एक ही मुखड़ा और अंतरा है। तो मुंशी जी को बुलाओ, उनसे कहो 2 अंतरे और लिख के दें। तो वो 2 अंतरे जहाँ लिखवाने के लिए उनको बुलाया गया, वहां मेरी नौकरी शुरू हुई है। तो वहां से आई पिक्चर में सॉन्ग राइटर की जरूरत पड़ गई वहां पे, तो हमारी नौकरी लग गई। एंड अ राइटर, एक मुंशी जिनका मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, शायद आपको इसका ना मालूम हो कि अ राइटर वॉज अ मुंशी सो एंड सो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट में एक लेजेंडरी राइटर उस दौर में, जिसका नाम भी आज याद नहीं, उनका नाम था मोहनलाल गोपाल दास दवे। मोहनलाल गोपाल दास दवे ये किया करते थे, अ राइटर वर्किंग फॉर दी देन कोहिनूर फिल्म कंपनी, उस जमाने में बॉम्बे ही था। और ही वॉज ए ज्वेलर बाय प्रोफेशन, लेकिन the task, yet he turned out a script, almost one script every month. And you will ask me how? कि देखिए, उस जमाने में जो अमेरिकन फिल्म्स यहाँ रिलीज होने वाली होती थी, तो उनका एक सिनॉप्सिस की शक्ल में वो कहानी का बिट लेके, और वो एडवर्टाइजिंग मटेरियल के तौर पे आया करता था, which this man had a knack to pick up the story, turn into an Indian milieu and write out a screenplay. And that became another, and a legendary man who could work like this. And he became a famous name in the इंडस्ट्री के। भाई उसके पास जाओ, उसके पास से कोई ना कोई कहानी पड़ी होगी, लिया, तो वो बनाया करता था, और उसको शौक था, और वो बस एक नैक था, कर लिया करता था। और अगर गौर से थोड़ा सा ध्यान करके देखें तो हम आज भी वही कर रहे हैं। Isn't that true? वही उसी तरह से अडैप्ट करते हैं, वहीं से सीक्वेंसेस भी ले लेते हैं, वहां से चेज भी ले लेते हैं, और वहां से वो जो ड्रामेटिक हैपनिंग्स हैं। Come to think, our commercial cinema is still doing the same for all these years till now. Unfortunately, Indian cinema has still not rid itself of the trappings of the early talkie era, as in Alamara or Hunter Wali. We are still repeating the same old cliches of excessive dialogue, songs, lights, fights, chases, and whatnot. Still, God still scores the maximum footage in every film of ours. वो सारे भगवान की फुटेज तो वो कम नहीं होती, वो तो भगवान के नाम पर तो चलती रहती है। He is omnipresent. The words and sounds have changed, but not the essence of the narrative. Of course, technically, there is much more slickness, and the visuals are in keeping with the galloping advance in technology, special effects, green screen. अगर if you know what is a green screen, कि आप पूरा एक्शन जो है वो एक हरे पर्दे के पीछे, अगर उस हरे पर्दे के सामने वो कर लें, तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कि ये आगरा में हो रहा है, या दरिया किनारे हो रहा है, या लंदन में हो रहा है, और वो सीन यहाँ पे किया जा रहा है। We also call it so. And at that time, in the margin of this mainstream cinema, which we call a commercial cinema, now defined in a defined way, which we didn't name it at that time, there has been another stream of cinema since 70s, which is often thought-provoking, close to life, and is creative like literature. We also call it parallel cinema or
the offbeat cinema, whatever name you give. There were many names at one time given to it, but that is the parallel cinema, which is now very close to literature also, and that's a stream on the margin you should read. I know you're writing a book on the 70s, the cinema of scientists. Here's an author. She's working on it. Along with the Shantanu, I think. Shantanu Ray is also in Shamil also. And even interpretations of written literature like Bimal Roy's Do Biga Zameen, based on a short story by composer Salil Chaudhary, which again is based on a poem by Tagore himself. That poem is also called Dui Biga Jami. उस पोइम के से उस पोइम पर सलीला ने स्क्रीन प्ले बनाया. Salila ने was a famous music director, and that adapted into Do Biga Zameen, the first which won the Karlovy Award at the international cinema. So that was the change which started happening, which on the margin of news, another cinema came in. Now again attached to literature, and वो जो literature थोड़ा सा distort होके बदल होके कुछ और होता चला जा रहा था, उसमें से ये फिर छन के एक और stream सिनेमा की निकली है, where दोनों parallel चलने शुरू हुए. Satyajit Ray's Apu's trilogy, adapted from Vibhuti Bhushan Banerjee's two novels, that became another piece of literature totally on screen. And beautifully interpreted with authenticity and true spirit of the original literary writing, and gave its own authentic interpretation also. So this was a very interesting phase which starts now again. Then Satyajit's Shatranj Ke Khiladi and Sadgadi were taken from Munshi Premchand's short stories, and you have seen Sadgadi is a very beautiful interpretation of the original, and so was Shatranj Ke Khiladi. मुझे पर्सनली बिल्कुल, यू विल फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट, कि मैंने वो कहानी भी पहले भी पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की, उन पर काम भी किया था, और वो पढ़ते हुए उतनी खूबसूरती से उसकी इंटरप्रिटेशन जो रे साहब ने की थी मुझे समझ में नहीं आई थी. आफ्टर रे साहब फिल्म आई अंडरस्टूड दिस शॉर्ट स्टोरी मच मोर एंड विद मोर क्लैरिटी. It's a confession. And Shyam Benegal's Charan Das Chor, based on Habib Tanvir's play, derived from a Rajasthani folklore. Junoon from Ruskin Bond's novella, जिसका नाम था A Flight of Pigeons. Just some of the instances which I can narrate here. To come back to Shakespeare, he has been interpreted by Vishal Bhardwaj with Maqbool, Omkara and Heather, 3 plays which he has done and played. His adaptations are so well adapted to our own milieu that at times I feel those are original screenplays and not of Shakespeare. That's my personal feeling, which I've always interpreted to him and told him. For example, in Heather, the way you see the movement, the people of Kashmir, I don't think it would remind you of Shakespeare anywhere. But it is somewhere, it's a very, very intelligent, wise and clever adaptation of those plays. All these 3 films by Vishal. There has also been there has also been emergence of author-based cinema, not adapted from any book or connected out of thin air, which in a way is an extension of literature. From here starts another point which I want to put across to you all, and that is why I went through all this. Now this extension is very, very important.
I'll read it again. There has also been emergence of author-based cinema, which you write straight away for the screen, with the new form called screenplay, and not writing a novel or a poem or a long story or anything else. You're writing for cinema, and it is an extension of literature again, happening with the new language, with the new form of the moving images. I can quote Sham Benegal's Mammu, Sardari Begum, Zubayda. These are centered on biographical relationships within a Muslim family written by Khalid Muhammad. And Khalid Muhammad's Fiza was a result of his investigation of a newspaper reporter on hundreds of youths who were scattered around the country in the happenings of the 1992 उसमें and Fiza was another very beautiful film made by him. The new cinema at times writes of one's experience straight out of the life and thus creates its own literature in its own language of images, like Aparna Sen's memorable 36 Churangi Lane. A Wednesday, a film by Neeraj Pandey, not a written document anywhere. This is straightaway writers writing a new literature on cinema, on the screen straightaway. Now it's a new language which we formed, has come in this form. Nandita Das Firak, Rakesh Om Mehra. Very, very beautifully done film, Mere Pyare Prime Minister. I don't know how, it was not extensively released, but I'm not sure how many have seen it. It's another very beautiful effort. Straight away, right, go work out the scene with the people in those slums and keep on, make a scene there itself with those, what is happening, what you want to say, and picturize it. That was another process which was, I think, a great effort of cinema here. Again, making a new literature, a new form of literature. Meghna's two films, my daughter, I can mention those films. उसकी तारीफ अब आपके सामने तो क्या करूँगा, लेकिन I must mention those films. Sam Bahadur was the latest which was released on a biography, very honestly done and researched. But then Chapak and Filal are very important films. Chapak, particularly the acid victim girls, those whom she met, and somebody in Agra whom she met, and with that girl's life knowing, and other girls जो बॉम्बे में हुए थे इंसिडेंट, उनको मिलके, and then she wrote it straight away for the screen and made that film Chamak. These were not from any published stories, but delved deeply into from the experience and real life people. They have been written straight away as screenplays and picturized. Now, there are two forms once again now you start watching it. One is the screenplay which is written for the screen. Now cinema and literature coming now parallel and closer. As close as you can with your lighter to light a cigarette of the next border walking along. Of late there has been a trend of making biopictures, which is more than welcome, but statutory warning, stories should not be distorted in the slightest, because I remember एक साल में जब 4-5 भगत सिंह बन रहे थे तो एक में एक ने डायलॉग दे दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो I said this is not Bhagat Singh, this is
सुभाष चंद्र बोस हमारी हिस्ट्री में क्योंकि सर पर बात तो एक ही है ना तो व्हाट डू यू डू टू दैट सो दैट मेक biofilms make it with authority and make it truthfully and honestly and sincerely that is it's a strict word और आसान काम नहीं है of late there has been a trend of making biopics which I've told you. Keeping all things in mind, it's heartening to conjecture and perhaps original screenplays will become the future form of literature, be it as printed word or on the screen. Now, how do you define it? It will take its own time. It's easier to say, but America is one more example. Initially, it was written as a screenplay, published and transferred to a film later. It was conceived entirely in cinematic images, and director Nagesh Kuknur, if you know, casually said once, I have quite a few interesting people in real life, and I want to relate to them on the screen. Mark it. He didn't say, I want to write it. He said, I want to introduce them on the screen, some interesting characters which I have met. Perhaps that's more simply said than achieved. There are many unanswered questions beneath that aspiration, which I am sure will be discussed in the coming times. But I do want to register this. I might add that frequently I feel that short films and documentaries are infinitely closer to pure cinema. बहुत प्योर लगती है वो कहानी जब आप उनमें शॉर्ट फिल्म्स में कहते हैं टू एंड विद दिस आई मे seek your permission for this to say this I would like to quote Rabindranath Tagore around 1929 in Madras at that time which is Chennai now he stated cinema will not become an art till it depends on the use of words and language. To that may I add, and produce its own literature in its own distinctive form of images, instead of leaning against already said and written and done. I made my humble efforts with the marches, which are reflections of my times. I didn't take it from any novel, any short stories. I wrote it for the film. After all, the point which I wish to make, जिसके लिए मैंने आपको तकलीफ दी इतनी सुनने की, I wished ultimately cinema will have to produce its own literature, be it written before the film or after the film. Cinema must produce its own literature. It's another language, it's another medium. So let it produce its own literature. And if any classics are to be interpreted, the authentic people have to interpret as you write in another book, as you interpret Shakespeare, as you interpret Kalidas, as you interpret Bhagavad Gita, as you interpret Mahabharata, with that authenticity. Otherwise, anybody else has no right to make those classics and interpret them. The maker has to be the author of the film, what we can call an author cinema in future, and that's where I wish to end. I have a film poem again, my film ka kyun, and again translated by my friend. And अगर आप कहेंगे तो बाद में सुना देंगे, वरना this is where I wish to end. Thank you. Thank you so much. Thank you for your patience. And जी अच्छा, इसमें से एक पोएम मेरा सुनाने की ख्वाहिश तो है, इजाजत है।
काश भाई आपसे इजाजत देकर कि मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिल्म, बीइंग फिल्म मेकर, वन शुड बी एबल टू से दैट इफ यू मेक योर ओन लिटरेचर, इफ यू स्टार्ट मेकिंग सिनेमा एज योर, मैं अपनी फिल्मों में सब जगह हूँ। शांतनु, आई एम रीडिंग ओनली द हिंदी वन। मैं अपनी फिल्मों में सब जगह हूँ। सजावटें और बनावटें सारी मुझसे उतरी हैं, मैंने दी है। वो ढलते सूरज की शान और शौकत, वो गरूर, वो मैं हूं। वो दिन भी मेरी ही सल्तनत था जो लुट गया है। वो सुबह जो पत्तियों के पीछे तैयार, वो सुबह जो पत्तियों के पीछे नहा के तैयार हो रही है, उसे भी मैंने ही उस जगह पर खड़ा किया है। वो सुबह जो पत्तियों के पीछे नहा के तैयार हो रही है, उसे भी मैंने ही उस जगह पर खड़ा किया है। कहानियों में बहुत से किरदार हैं, बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो मैं हूं। सभी में कोई न कोई हिस्सा है मेरी अपनी ही जिंदगी का। Every creative person reflects in his own work. किसी अपाहज के दस्तबाजू उतार के मैंने रख लिए हैं। कहीं पे मैं अपनी जात पर रहम खा रहा हूँ, कहीं पे अपनी ही जात से इंतकाम लेकर हरीफ पर चोट कर रहा हूँ। My own weaknesses, वो शौक मेरे, वो खौफ मेरे, अधूरे पूरे जो मेरे अंदर बसे हुए हैं, ग्लेशियर की तरह खड़े हैं। मेरी उम्मीदें भी बैकग्राउंड, पसे मंजर में आलाप करती सुनाई देंगी। मेरी उम्मीदें पसे मंजर में, इन द बैकग्राउंड, आलाप करती सुनाई देंगी। वो मेरी फिल्में हैं और मैं हूँ। मैं अपनी फिल्मों में सब जगह हूँ। मैं अपनी फिल्मों में सब जगह हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी फिल्मों में सब जगह। गुलजार साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है, अभी आप जानते हैं कि कुछ ही वर्ष पहले हिंदी सिनेमा ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। और गुलजार साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सिनेमा को बहुत करीब से, उसके बिल्कुल पास से, उसके कालखंड के भीतर से न सिर्फ देखा समझा बल्कि उसमें योगदान किया है। ये एक ऐसा इतिहास है जिनके पास न सिर्फ सिनेमा की बल्कि साहित्य की दोनों विरासतें इनके पास सुरक्षित हैं। ऐसे इतिहास पुरुष को एक बार हम लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। इन्होंने जितने बारीकी से, रोचक तरीके से सिनेमा के बहुत सारे जो पूरा एक दौर है उसको जिस क्रमबद्ध तरीके से आपने बताया, वो बहुत ही रोचक और हमारे लिए बहुत स्मरणीय रहेगा। आज का ये संवत्सर व्याख्यान आप सबकी स्मृतियों में बहुत दिनों तक दर्ज रहने वाला है। और मुझे याद आ रहा है कि जब हमने साहित्य अकादमी की ओर से उन्मेष का आयोजन शिमला में किया था, तो गुलजार साहब ने एक विमर्श शुरू किया था कि जो सिनेमा में स्क्रीन प्ले है उसे भी साहित्य का दर्जा दिया जाए। उसके बाद ये बात कई मंचों से उठी। उन्होंने फिर बाद में एक साक्षात्कार में भी अपने इस बात को और मजबूती से उठाया। और आज आप देख रहे हैं कि सिनेमा और साहित्य का जो संबंध है इतना करीब आ गया है कि आज बहुत सारी कृतियों पर बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। सिनेमा के लोग अब साहित्यकारों के पास आ रहे हैं। सिनेमा में बहुत सारे साहित्यकार अभी ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं। और अभी नई पीढ़ी के बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं कि जो अभी सिनेमा में लिख रहे हैं। तो ये जो एक संबंध बना है, इससे हमारे समाज का बहुत फ़ायदा हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि गुलजार साहब इन दोनों विधाओं के
केंद्रीय पुरुष हैं, इतिहास पुरुष हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से उनके इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आदर व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और साहित्य अकादमी के महत्तर सदस्य प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी, साहित्य अकादमी के सम्मानित सचिव, मंच पर पधारे और जो ये संवत्सर व्याख्यान आज माननीय गुलजार जी के द्वारा दिया गया, उसको हमने पुस्तकाकार प्रकाशित किया है, जिसका लोकार्पण यहाँ पर होगा। मैं आदरणीय तिवारी जी को, आदरणीय राव साहब को आमंत्रित करता हूँ कि गुलजार साहब के कर कमलों से इस व्याख्यान का लोकार्पण किया जाए। आदरणीय माधव कौशिक जी, कुमुद शर्मा जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारें। कि गुलजार साहब के पास सिनेमा के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो जो इनकी जानकारी है, जो इनकी सूचनाएं हैं, वो बहुत ही प्रामाणिक हैं। इसलिए ये जो सिनेमा पर शोध करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये व्याख्यान बहुत काम का साबित होगा। मित्रों, ये व्याख्यान पुस्तकाकार रूप में जो हमने प्रकाशित किया है, साहित्य अकादमी के बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूं आदरणीय गुलजार साहब के प्रति, आदरणीय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के प्रति, माधव कौशिक जी के प्रति, कुमुद शर्मा जी के प्रति और आप सभी के प्रति। जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये कापी हमारे बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, आप इसे वहां से खरीद सकते हैं। आप सब ने बहुत ही मनोयोग के साथ आदरणीय गुलजार साहब को सुना। ये शाम बहुत ही यादगार रहेगी। हम साहित्य अकादमी की ओर से आप सबके बहुत ही आभारी हैं। आप सब साहित्य उत्सव के कल के कार्यक्रमों में भी इसी तरह शामिल हो। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमने कई नए विषयों पर आयोजित किए हैं। आप सब उसमें समय पर शामिल हो, इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।